in current scenario, whatever the human body's parts and whatever the inventions in the science we are observing, they are closely related to each other. For example, let's see, cleanse first. This is, so for that purpose, we are having hammer, right? Like see this one. So we are using the hammer for this purpose. Legs. So why the legs are used? Legs are used to have the motion. We can run around, right? So the invention that comes into our science is wheel. Wheel is a device through which the thing can be located from one place to another place. Then human brain. What the human brain do? Human brain controls all of the actions of the body, right? That is the human body do. That human brain do. And what the invention we have done? So we have done that invention of computer. It also control the CPU also control all the executions. Then if we say about the human eye, so what is the eye basically? It is a component of a body that is observing the things, that is able to see the things, right? So for this purpose we have invented the device camera. So what you can say, what you can observe over here, that different body parts and the inventions of the science, they are closely related to each other. Like human brain control our whole body activities, so the CPU control on the system, right? Eye is the component which is able to see the things. We are able to see the things in our surrounding. So that thing we can capture with the help of camera, right? So probably they are most related. They are most related to each other. Now, so today we will be discussing the topic that is called human eye, right? See, human eye is the one of the most sensitive part of human body. As we all know, there are five different body parts are there, right? These five body parts are the sense organs basically: the tongue, eye, ear, nose, and skin, right? Skin is a body part which is help us to sense the temperature, sense the touch, right? Ear is a part which senses the vibrations. We can listen the things, we can observe the vibrations. Nose sense the smell. Is it good smell or a bad smell? Tongue is used for the taste, whether it is sweet or sour, right? These are kind of the sense organs we are having. And in the last but not least, the most sense part is the human eye. This is a body part which relate us, which enable us, which facilitate us to the thing, to the see the things that in our outer world. Our world is so fantastic. Our world is having so lovely scenarios, but how can we say them? How can we see them? With the help of the human eye. दीपिका ग्लूकोमा पे बात में आगे, अभी जो चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करे, राइट? Now we will be coming to that one, don't worry for that. So human eye. So human eye is the one of the most important part of our body, due to which we can see the things very, right? They enable us to see the things very clearly. Okay, means we can see the objects, the things. So what is this function, how it works? So this is a simple structure what we are having over here. शशांक, अभी हमने केवल शुरू किया है बेटा ह्यूमन आई के बारे में, हम केवल स्टार्टअप में, अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया है ना. ह्यूमन आई. So first of all, if anyone says that what is a human eye, so we can say that the human eye is a sense organ of human body which enable us, or due to which we can see the things in near to our surrounding, in our surrounding, right? The things are able, we are able to see those things.
So in this chapter, we are not going to discuss about the human eye in the biological concept, that what are the tissues are there, what are the cells are there. No, we will discuss this topic in the reference of physics, that how the defects are there, what kind of vision defect can we have, how this work on the basis of the reflection or refraction. This will be our study, area of interest will be for the human eye. Now, as you can see here in this diagram, we are having a sketch of human eye. So a few things about this human eye is, number one, the diameter of human eye is about 2.4 centimeter, right? 2.4 centimeter is the diameter of human eye. Now, the front part, this okay, the front that we are having here is basically the transparent layer, that is a hard layer over this iris and pupil, is called cornea, right? It is called as cornea. Then we are having V. This is the transverse structure by which you can say, you can observe that what is basically the cornea. Cornea is basically a transparent layer. Wait a moment. That is covering our iris and eyelids and the pupil. This transparent layer is basically cornea, right? What is the function of this cornea basically in general, if I say? Then number one, Mantasha, yes, almost 2.4 centimeter is almost constant, but always remember it is like we are talking about for a general man or female, the adults, right? अब आप ये कहो कि 6 महीने के बच्चे में भी आई बॉल की डायमीटर इतनी होगी, तो पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट होते हैं, ये एक मोटा मोटा डेटा है, ठीक है ना। तो ये कॉर्निया जो अपन ने लगाया देखा, ये कॉर्निया हमारे आइरिस के ऊपर होता है। इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है कि आई लेंस और कॉर्निया के बीच का एक लिक्विड होता है जो बेसिकली रिफ्रैक्शन में वर्कआउट करता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं बहुत जनरल डिस्कशन में, तो ये डस्ट पार्टिकल से हमारे लेंस को डैमेज होने से बचाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। देन इफ आई से the cornea is a thin transparent membrane bulging outward, बाहर की ओर निकला हुआ एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आपके लेंस के ऊपर होता है, आपके इरिस के ऊपर। Okay. Now, maximum refraction of light takes place from cornea. जो भी रे ऑफ लाइट आती है आपके आईज पर, वट एवर द रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन द surface, so the refraction will take place from the cornea. Like, see, this is a different parallel rays that are approaching towards the eye lens. So the refraction will be there and they will be going to converge on that, right? Second, we are having the iris. आप सभी की आंखों में आप ध्यान से देखो तो एक लगभग मटर के आकार का एक स्ट्रक्चर है आपका, ब्लैक कलर का, या किसी में ब्राउन होता है या किसी में डार्क ब्लू होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। इसे क्या बोलते हैं आप? आइरिस कहते हैं। दिस इज नोन एज आइरिस। और ये आइरिस क्या करता है? ये आइरिस हेल्प करता है द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज गोइंग टू एंटर इनटू योर आईज। कितनी लाइट आपकी आंखों में जा रही है, रेटिना पर जा रही है, उस अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है बाय चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द पिपल। जो पिपल है इसके सेंटर में, जिससे लाइट अंदर जाती है आपके रेटिना की तरफ, उसकी साइज में वेरिएशन करने में हेल्प करता है आइरिस, जिससे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट ही आपकी आंखों के अंदर जा सकती
See, this bluish part is called basically iris, right? And this is the pupil. So iris is basically, helpful in the contraction or the expansion of the pupil, depending upon the intensity of light which is going to enter into your eyes, right? You must have observed one thing: whenever there's a lot of light is coming into your eyes, your pupil has been shrinked to the minimum. But in the dark room, when you're looking for something, so your pupil has been expanded. Why they have been expanded? Because in the case of dark room, when we are not able to see the things very clearly, because this is a dark, lot of darkness is there. So our iris try to, expand the pupil so that maximum light can enter into the retina and a proper image can be formed. But in the daytime, when the intensity is too high, like suppose this lamp is blowing on my face, so this is causing, whenever I'm looking towards this lamp, it is causing the shrinking of my pupil, right? So this shrinking and this expansion of the pupil is not automatically done. It is done with the help of iris, because this pupil is kept between the iris. So whenever the iris will put the force on the pupil, so pupil सिकुड़ जाएगा, right? तो हमेशा याद रखें, आयरिस और पीपल में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैं आपको पहले बता दूं कि पीपल क्या है। पीपल इज अ पार्ट, वेट अ मोमेंट प्लीज, चैनल सर को कॉल है। ओके, सो सॉरी। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। फिर से मैं बात करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। whenever the intensity of the light is too high, that is coming into your eyes, so this people will, shrink, so that the minimum amount can enter into your eyes, right? So this retina, this sorry, pupil is a part through which the light is entering into your eyes. But how this retina will shrink, how will retina this expand, that is totally governed by the eyes. फिर से समझिएगा, दो चीजें हैं बेटा, आयरीज और प्यूपिल। प्यूपिल एक रास्ता है जिसके थ्रू लाइट अंदर जा रही है आपके रेटिना की ओर, राइट? अब ये रास्ता पतला भी हो सकता है, ये रास्ता चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये चौड़ा कब होगा? जब आप किसी अंधेरी जगह होंगे, डार्कनेस में होंगे। क्यों? क्योंकि डार्कनेस में आपको इमेज दिख नहीं रही। ऐसी अवस्था में क्या होगा? आपका पीपल फैल जाएगा कि जितनी ज्यादा लाइट आपकी आंखों में जा सके, जिससे इमेज आपका बन सके रेटिना, राइट? और ये सिकुड़ेगा कब, ये श्रिंक कब करेगा? जब बहुत ज्यादा लाइट आ रही हो। वो आपने मूवी देखी होगी नारायण शंकर की, याद है? कहता है कि मैं सूर्य की आंखों, सूर्य से आंखें मिला के आंखें देखता हूँ। कौन सी मूवी थी बताइए, किसको याद है? नारायण शंकर कैरेक्टर था ना अमिताभ बच्चन। हु कैन टेल मी? Maria, I will be sharing the link on the YouTube of this recording, right? Even when you come back in July, all this presentation will be on the smart panel and the teacher will teach you with the help of these animations, these PPTs. Okay, so don't worry for that.
ओके, सो ये चीजें सबको क्लियर हो गई? तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये सारे पीपीटीज एनिमेशंस आपको मिलेंगे करने को। ओके, मंतशा कह रही है नहीं। ओके, किसी को नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूँ। आप लोग को शायद तब तो आप पैदा भी नहीं होंगे। एक मूवी थी मोहब्बतें। इन दैट मूवी इट वाज अ कैरेक्टर नारायण शंकर, वो कहता है कि मैं सूर्य से को देख कर काम करता हूँ आंखें। तो तुम अपनी लाइफ में कभी सूर्य को देखने मत लग जाना, नहीं तो रेटिना डैमेज हो जाएगा। राइट? तो जब भी हम प्रकाश में, जब भी लाइट ज्यादा हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमारा पिपल श्रिंक कर जाता है। इस एक्टिविटी को आप घर पे कर सकते हैं। आप मोबाइल की टॉर्च को ऑन करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने इस इरिस पे मारो, आपको देखो वो सब दिखेगा। राइट? तो ये जो प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन है, प्यूपिल का एक्सपेंशन है बेटा, ये गवर्न होता है आइरिस के द्वारा। ओके, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, so behind the cornea there is a dark fleshy skin that is called iris, and this iris, help us to see the things. Coming to this, now the third part is pupil. तो मैंने आपको प्यूपिल का भी एग्जांपल सेट कर दिया, प्यूपिल के बारे में भी बता दिया, मैं फिर से देख लीजिएगा। आइरिस के अंदर पिपल है। आइरिस पिपल को कंप्रेस या एक्सपेंड करता है। राइट? पिपल इज अ पाथ थ्रू विच द लाइट एंटर इनटू योर आईज। गॉट इट? दिस इज द थिंग, है ना? तुम सबकी आंखों में ये है। आज आप सब अपनी आंखों को देखना ध्यान से। राइट? चलो, pupil is a opening of changing diameter at the center of the eyes. Right? Clear? तो प्यूपल इज अ पाथ, प्यूपल इज अ, यू कह सकते हो कि आपके घर में जैसे गेट होता है ना, तो गेट क्या करता है? लोगों के आने जाने का एक तरीका है कि गेट ओपन होगा तो लोग आ जा सकते हैं, गेट बंद होगा तो लोग आ जा नहीं सकते। तो प्यूपल इज द एंट्री गेट बेसिकली, थ्रू विच द रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू योर आई। राइट? Don't worry for this. All the notes will be given to you. All the components, they are working. I will explain you, and I will tell you to take the screenshot over there. Now, see the function of iris. Regulates the amount of the light entering the eye, and second is imparts color to the eye. Right? दो चीजें आइरिस कर रही हैं। देखते हैं ध्यान से। आप यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल है आपके पास। In bright light, pupil contracts, right? Whenever the bright light is there, so the pupil will contract. Whenever the dark light is there, so the pupil will expand. Now you can feel that difference in both the diagrams. In the first diagram, the pupil has been shrinked. In the second diagram, the pupil has been expanded. Is it clear to everyone? देखिए, आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप सभी जब एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे बेटा, तभी चीजें समझ में आएंगी आपको, अदरवाइज नहीं आएंगी। एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जितना अभी तक हमने पढ़ा, ये समझ में आया आप सभी को? Respond me through the chat so that I can move ahead. I want all the responses. The things so far what we have discussed is clear to everyone. Only 7 responses are there. रजत, यहाँ आइरिस नहीं कॉन्टेक्ट हो रही, ध्यान से देखें अगर आप। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बेटा, ये है आपका प्यूपिल। यहाँ प्यूपिल श्रिंक हुआ है और यहाँ प्यूपिल एक्सपैंड हुआ है। राइट? अब सीधी सी बात है, जगह हमारी उतनी ही है ना आपकी, प्यूपिल की और आइरिस की। तो जब प्यूपिल एक्सपैंड करेगा रजत, तो वो आइरिस को कंप्रेस करेगा, और जब प्यूपिल श्रिंक होगा तो आइरिस फैलेगा। राइट? ओके, तो ये चीजें क्लियर होगी, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। नाउ, in dim light, the pupil widens. So the tendency of the pupil to adjust the opening for light is called adaptation. See, various terms we will be discussing.
Number one, adaptation. Our word will come to us is accommodation. We will discuss that again in the coming time. Accommodation we will also learn. But before that, here is a term that is called as adaptation. What is the adaptation? So the tendency of the people to adjust the opening for light. Means कहने का according to the intensity of light, जो भी intensity of light आपके दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग पीपल अपनी डायमेंशंस को कम या ज्यादा कर रहा है. मींस इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो अपने को श्रिंक कर ले रहा है, और अगर इंटेंसिटी कम है, डार्क है, तो वो अपने को एक्सपैंड कर रहा है. दिस टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू एडजस्ट दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एडॉप्टेशन. क्या कहेंगे आप इसको? एडॉप्टेशन कहा जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एडॉप्टेशन. क्लियर एवरीवन? इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? Adaptation is what? The tendency of changing the opening of the pupil according to the intensity of the light is called adaptation. Okay? कहीं कोई डाउट हो प्लीज पूछिएगा. आते हैं अगले पर हम. See, this is the general condition. Whenever we are having the dim lights, so we will be having that kind of pupil that is expanded. Whenever we are having the dark light, sorry, bright light, it will be shrink. Now the second thing that we are talking about the iris is about the impart color to the eye. So in the first diagram, you can see it is a brownish color. Here it is like gray color, right? So different color of iris you are observing, by which we say the color of the eye. कहते हैं ना, किसी की नीली आंखें, किसी की काली आंखें, किसी की भूरी आंखें. That is the iris. Iris के कलर चेंज होते हैं, जिसके कारण आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, right? Different color of eyes is because of different color of eye. जिस इंसान की आंखों का आइरिस का कलर जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी आंखें उस कलर को डिनोट करती हैं. Now, so far we have discussed about the cornea, iris, pupil. Now coming to this eye lens, right? The fourth is eye lens. Eye lens is the transparent double convex lens. Transparent double convex lens, which is made up of protein, right? Which is made up of protein, and it is transparent layer. The protein is here, but it is in a transparent way so that the rays can be converged to the retina, right? The back end part is called retina. Retina is what? Retina is a screen where the image is going to form. Whatever you have seen, like I'm observing that bottle, so the image of that bottle is forming at my retina. Okay, so whatever the object, कोई भी object होगा जो बाहर आपके सोसाइटी में, बाहर आपके सराउंडिंग में है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी, right? The screen on which the image is formed in the eye, that is called retina. Okay, always remember, if the image is not going to meet at the retina, so that image will be not clear to the person. It will be a blurry image. वो जो विजन डिफेक्ट की हम बात करते हैं ना, कि विजन डिफेक्ट हम देखते हैं ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, this is a single reason that the images is not going to form at retina, right? They are either forming before the retina or after the retina, right? Now, it is a light sensitive screen made up of light sensitive cells. These cells get activated upon illumination. See, basically retina में दो तरीके की cells होती हैं, जिनको हम कहते हैं rods and cones, right? So what are the rods and cones, my dear? So rods and cones are the photosensitive cell that make the retina, right? That makes the retina. Got it? तो ये लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेटेड होती हैं जब उन पर लाइट पड़ती है. रॉड्स एंड कोन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. दे आर गिविंग द नॉलेज अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. दे गिव द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? These are the things that the retina tells, that these photosensitive cells tell us. Okay. Now, retina is made up of two type of photosensitive cells, that is called rods and cones. Clear है?
आप देखो डायग्राम में दोनों आपको देखने को मिल रहा है, रॉड स्ट्रक्चर भी और कोन स्ट्रक्चर भी, राइट। Rods are responsible for adjusting our eyes to different intensities of light. Means whatever the intensity of light we are observing, that the rods are responsible for that. जैसे अभी लाइट चली गई तो ये मेरा लैंप कल ग्लो कर रहा है, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी अफेक्ट हुई, राइट। तो जब भी हम उजाले में देखते हैं, जब भी हम अंधेरे में देखते हैं, तो ये रॉड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट from that object is adjusted to these rods are responsible for that, and the cones are responsible for the perception of color. Perception of color means what kind of color of that given object is. This color is given by that cones. ठीक है बेटा। तो रॉड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन होंगे कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that the rods are also responsible for the shape and size of the given object. Clear है? चलो। Then we are having the optic nerves. So देखिए, जैसे आपके घर में एसी लगी होगी, आपके घर में फैन लगा होगा, तो फैन कब ऑपरेट करेगा? जब उसका कनेक्शन पावर सप्लाई से होगा। एग्जैक्टली हमारी आंखों पे कोई इमेज बना तो हम कैसे जानेंगे कि ये किसकी इमेज है? हाउ कैन वी नो दिस? So this, the signals, the sensation that is observed on the retina is converted into the electrical pulses with the help of this optic nerve, and these optic nerves transmitting these electrical pulses to the brain, where the brain process and tells us कि भाई ये ताजमहल है, भाई ये लाइट है, भाई ये लैपटॉप है। कहने का मतलब, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनता है रेटिना पर, तो रेटिना की रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होती हैं और वो एक ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करती हैं, एक इलेक्ट्रिकल पल्स। ये ऑप्टिक नर्व इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस को कैरी करता है और आपके ब्रेन तक लेकर जाता है, और ब्रेन तक ले जाने के बाद ब्रेन इसको प्रोसेस करके आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट था। ये चीजें क्लियर है सबको? Please tell me, everyone, is this clear? सर, क्या क्रिस्टलिन लेंस को आई लेंस कहते हैं? बेटा, क्रिस्टलिन लेंस को हम आई लेंस कब कहते हैं? जब हम कैटरेक्ट का सर्जरी करते हैं और आई लेंस को निकाल के आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, राइट? यस अनुष्का। रजत, रेटिना तो आई में है, तो आई में स्क्रीन कैसे हो सकती है? आई में स्क्रीन कहने का मतलब है रजत यहाँ पर कि वो जो रेटिना है वो एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। स्क्रीन मतलब नॉट मिरर, स्क्रीन मतलब एक पर्दा जहां पर इमेज बन रहा है। तो रेटिना वो इमेज बनाने का काम करता है, रेटिना एक उस तरह का पर्दा है। रॉड्स एंड कोन अनुष्का, रॉड क्या करता है? रॉड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करता है कि कम लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से या ज्यादा लाइट आ रही है। और कोन कहता है जो कलर्स, जो ब्लू कलर, रेड कलर, ये सारे कलर्स बताता है। बाय द वे, टुडे सेशन इज गोइंग टू बी ओवर, मैं इसको यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। एंड आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं, और इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो आप उसको फ्यूचर रेफरेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। आई विल बी